welcome. This is Shruti Kaushal, and you're watching IndiaTV ShowBiz. If you are buzzed by social media, you know who Shibani Bedi is. Sometimes a mother, other times Gurgaon wali buaji. Shibani never fails to make her fans laugh. And now she is sharing screen space with Bhumi Pednekar, Shehnaaz Gill, Dolly Singh, and Kusha Kapila in her big Bollywood film. Thank you for coming. Hello, Shibani. How are you? I'm good, Shruti. How are you? How are things with I'm you? also good. So you started your film career in 2015 and appeared in several films like Rang De Basanti and No One Killed Jessica and also web series as well. So Yeah. how has been your journey from your first film to the TIFF? And today you put up a story, a post also on Instagram with you on a billboard. So Yeah. how's that feeling? It's been like a dream only, Shruti. मेरी टीम में मेरे मैनेजर का मुझे सुबह मैसेज आया कि देखो मेहनत सब करते हैं, कोई भी अपनी जिंदगी में अपना करियर इस उम्मीद से स्टार्ट नहीं करता कि वो फेल हो जाएंगे. Yeah, ठीक right. है. हम whenever we start our careers, any journey in life we start, we hope for the best. Everybody puts in all the hard work, patience, resilience, खून के आंसू, पसीना, Yeah. पैसा, मेहनत, पानी, hoping कि आगे जाके गाड़ी चलेगी. But not everybody ends up reaching some milestones in life Right. all the time. And the fact कि आप ये milestone achieve कर रहे हो is a huge blessing. I hope you know that. And I was like, हाँ रघु, मैं जानती हूँ क्योंकि I feel like so मैंने रंग दे बसंती और No One Killed Jessica करी थी, श्रुति, जब मैं 18-19 साल की थी. Like रंग दे बसंती released in 2004, 2005 something. And no, हाँ 2005-6 or something. And then No One Killed Jessica in 2010. एंड दोज वर छोटू छोटू एक एक दो लाइन का रोल, कुछ काम नहीं था. ओवर टाइम जो भी काम करा है हैज कम धीरे धीरे. काफी टाइम तक तो मैंने एक्टिंग का ए भी नहीं करा था बिकॉज आई वाज लाइक भाई ये तो बड़ी अनस्ट्रक्चर्ड टेरिटरी है, इसमें पता नहीं क्या फ्यूचर है, ये चांस नहीं दे सकते. बट मुझे कभी कभी लगता है कि मेरी जिंदगी ना घूम फिर के मुझे वापस ही लेके आती रही यहाँ पे. एंड आई फील लाइक चाहे मैंने कितना भागने की कोशिश करी, ये शायद होना था. वो कहता है ना, अग्नि परीक्षा भी मेरी हुई है लाइफ में ओवर टाइम, क्योंकि मैंने बहुत सारी टोपियां पहनी है. आई हैव बीन एन एक्टर, आई वर्कड एज अ जर्नलिस्ट फॉर 10 years. आई हैव लेफ्ट, आई हैव कम बैक, आई हैव सेड नो, आई हैव गॉटन हर्ट. Things I've done, nothing has worked out, nothing got me attention, even though I thought it might just help me in my career. And then to get to this place where I walked the red carpet with the people I walked the red carpet in a different country at a film festival, which is a very prestigious film festival. ये सपना सा ही है. मैं जब कनाडा पहुंची तो मतलब मुझे 2 दिन तो मेरे से तो आंसू नहीं रुक रहे थे. इवन द रेड कार्पेट जर्नी, वो पूरा दिन आई वाज लाइक, मैं ना मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, इतनी सारी फीलिंग्स हैं और आंसू ही आ रहे हैं और ऐसे बौखलाया सा लग रहा है. बट आई डोंट नो, लाइक आई And you कांट look स्टॉप. lovely. You look lovely at TIFF. Thank you. Thank you. That's all thanks to Riya, Manisha and Devanshi, the team. इन लोगों ने मतलब अपनी जान सब कुछ सब दिया है हमें वैसा दिखाने में. So it's all thanks to them. मेरे कपड़े मेरे नहीं है वो कपड़े वो सब ये लोगों ने अरेंज करे हैं. So वो इनका क्रेडिट है. Okay, so I watched the film yesterday, and it's a celebration of womanhood. Yeah. How did this character Tina come to you, and do you relate with her? So Shruti, Tina character I think came to me because so I got the I'm no matter, I've realized as a content creator you may be popular on Instagram or whatever, but to get roles in movies, at least at my stage, I don't know about people who are at a higher stage than me, but at least at my stage हर चीज ना बड़ी organically होती है. आपको ऑडिशंस आते हैं, आप ऑडिशन देते हो, फिर या तो आपको कॉल बैक आता है या फिर आपको कॉल बैक नहीं आता. तो मेरे को तो ऑनेस्टली टीना का कैरेक्टर ऑडिशन के फॉर्म में आया था और मैं ऐसी स्टेज में हूँ लाइफ में जहाँ पे मैं किसी काम को मना नहीं करती. अभी सब काम मेरे लिए भगवान है, तो मुझे जो मिलता है मैं हाँ बोलती हूँ और फिर देखती हूँ कि कहाँ लेके जाता है वो जर्नी. So yeah, I mean, I auditioned for Tina's character. I had 2 rounds of auditions. Didn't hear from the casting team for a month. Then Riya Kapoor called me. पहले तो मैं वही faint हो गई. I was like, oh my god, ये क्या हो रहा है? Who is calling me? Riya Kapoor, what? And then I think उसके बाद भी हमारे कुछ 6-7 round of auditions और screen readings और ये सब हुआ. और फिर जाके ये पिक्चर मिली. But I think जब मुझे स्क्रिप्ट मिली और मैंने पढ़ा,
देखो मैं वैसे भी, द फैक्ट कि मुझे रिया कपूर की पिक्चर करने को मिल रहा है, वो लोग मुझ में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, मेरे लिए तो वहीं पे मैं सोल्ड किया, आई वाज लाइक कुछ भी हो, ये तो हाथ से जाने नहीं देनी Right. अपॉर्चुनिटी, अगर मिल जाती है तो। बट जब मेरे को स्क्रिप्ट, दे सेंड दैट स्क्रिप्ट टू मी, आई वाज लाइक, आई वाज सो हैप्पी टू रीड अ स्क्रिप्ट अबाउट women like me, you know, Hmm. who are single in their 30s, independent, have probably fought through various systems, have explained or chosen not to explain the choices we have made to so many people, have to constantly battle people's questions and judgments around our character, our ambition, our dreams and hopes. I finally felt like, chalo, thank God there is representation. There will be a movie that will be made about people like me Yeah. who constantly feel like they are doing something wrong, you know. क्योंकि हमसे सवाल से वही पूछ जाते हैं जो चीजें हम कर नहीं पाते, एज अपोज टू जो Right. सब मैंने किया है या फिर जो हम करते हैं. एंड दिस मूवी बेसिकली इज द स्टोरी ऑफ मल्टीपल women हु आर imperfect, जिनके सारे टिक मार्क नहीं लगे हुए हैं लाइफ में, जो Right. गलतियां करती हैं, यू नो, जिनकी जिंदगियां परफेक्ट नहीं है, जिनकी जिंदगियों की कहानियां उस मोमेंट में भी टेढ़ी मेढ़ी हो रही हैं, उनकी चॉइसेस टेढ़ी मेढ़ी हैं, पर हौसला है, और यू नो, there's confidence, there's resilience, and there's also no apology and guilt around the spaces they occupy, कि भाई यही हैं हम और Hmm. ऐसे ही हैं और सीख रहे हैं, पर सॉरी नहीं बोलेंगे ज्यादा. Right. Right. ये हमारी जिंदगी है, हम इसके लिए हम सॉरी नहीं बोलेंगे, हमें तो खुश रहना है और हम खुश रहेंगे जैसे हमें खुश रहना है. तो मुझे बहुत अच्छा लगा था ये पढ़ के कि फाइनली ऐसी एक कहानी जो मेरी जैसी औरतों के बारे में, जो Hmm. मुझे, जिसको देखकर, अगर मैं पिक्चर का पार्ट भी नहीं होती, पर अगर मैं पिक्चर देखती तो मुझे लगता कि चलो थैंक गॉड किसी ने हमें एटलीस्ट कंसिडर तो किया कि हम भी जीवित प्राणी हैं और हमारी जिंदगी भी इज वैलिड एंड वी शुड आल्सो बी सेलिब्रेटेड इन सम Right. फॉर्म, यू नो. So, this film is not just about sex and orgasm, but smashing राइट. patriarchy. So, have या. you ever come across any misogyny or patriarchal notions that try to stop you from becoming who you are as a person today? All the time, Shruti. I feel from the day we are born, the day you're born as a girl, With the day instruction you're, manuals. yeah, the day your gender is assigned to you at birth, which is that of a woman, Right. the inputs never stop. आप सांस ऐसे ले रहे हैं तो ऐसे नहीं लीजिए, आप खाना ऐसे खा रहे हैं तो ऐसे मत खाइए. स्क्रूटनी आपको दुनिया के तौर तरीके, यू नो, बेसिकली एवरीबडी अराउंड यू कॉन्स्टेंटली ट्राइज टू पुट यू इन अ मोल्ड that makes it the safest way to live as a woman without threatening or harming anyone else and especially yourself. Yeah. You know, मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज कहीं पढ़ी थी कि कभी कभी ना जब आप दुनिया को चैलेंज करते हो ना, the world challenges you back. And for women, when they challenge the world, the challenges that they have to face never stop. The backlash never stops. If you look at any movement in the history of women fighting for empowerment, something as recent as a Nirbhaya thing, you know, the backlash to uh, the initiative that women take, or the rules and regulations that sometimes the justice system also creates to keep women in this country state is usually met with backlash. Something as simple as women's reservation in the metro. इतनी गालियां खानी पड़ती हैं, और औरतों को पसंद नहीं है कि उनको आप एक डब्बे में घुसा दो जहां पे वो इतनी इतनी जगह के लिए लड़ती रहे एक दूसरे के साथ, बट अगर किसी बाकी डब्बे में जाओ तो उनको कॉन्स्टेंटली हैरेसमेंट बैटल करना पड़ता है. सो यू नो, आई फील लाइक टू बी अ वुमन इज एज इट इज बाय डिफॉल्ट टफ. Yeah, right. To then fight for space is even tougher. To not apologize for choices that you make which don't stick to societal norms is a Herculean battle. I sometimes on my Instagram get questioned कि आप ऐसी rebellious जिंदगी, मुझे भी आपकी तरह rebellious जिंदगी जीनी है. And I'm like, भाई मैं कोई rebellion नहीं कर रही हूँ, मैं तो अपनी जिंदगी जी रही हूँ. अब मेरी शादी नहीं हुई और अब मेरे साथ कुछ कुछ चीजें नहीं वर्कआउट हुई, ये चॉइस नहीं थी, ये नहीं हुआ, तो मैं क्या कूद जाऊं बालकनी से अब, यू नो. तो ये रिबेलियन नहीं है, ये मेरी लाइफ है. Right. And I wish there were more stories and more narratives around women just being their own people who don't need to be validated by a tag or a role of mother, daughter, sister, something, and can just be their own person and just live their lives without the scrutiny. Yeah. So, yeah, I mean, and I'm talking about my own journey, हाँ, मतलब from the way I was in school, from my parents, from my mother, from the women in my family, to my teachers, and then आगे जाके आसपास सहेलियां, हर कोई आपको अपने बारे में क्वेश्चन तो करवाता है, बट अल्टीमेटली मुझे बस ये अच्छा लगता है कि मेरे अंदर थोड़ा ना, मैं रेजिलियंस और पेशेंस ज्यादा है, तो मैं ज्यादा सुनती नहीं हूँ.
और मैंने अपने मन की करी और थैंकफुली वो मेरे ऊपर मतलब हावी नहीं हुआ, सो यू नो दैट्स गुड. So how was it working with Bhumi Pednekar and especially Shehnaaz Gill? The camaraderie Right. among you guys is just amazing, and it shows in the film as well. So Yeah. how did you girls break the ice, and who did the first? I think so. You know, I didn't have a lot of scenes, Shruti, with Shehnaz. I think Shehnaz I met during the shoot of the 2 songs we shot. Mhm, yeah. But Shehnaz के साथ जो मेरा बॉन्ड बना है, या जो भी उनके साथ जो मेरी जो एक जो नेचर ऑफ हमारा जो फ्रेंडशिप है जो बड़ी है, वो प्रमोशंस के टाइम बड़ी है, बिकॉज हम पांचों के पांचों एक दूसरे के चेहरे के अंदर घुसे रहते थे सारा Right. टाइम. हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी. मतलब ये 30 दिन, पिछले 25-30 दिन हमने लिटरली एक दूसरे के साथ और एक दूसरे की वजह से ही आराम से निकाले हैं. बिकॉज ट्रेलर लॉन्च से लेके कल तक, जब मतलब सिक ये पूरा Hmm. आई थिंक 29 दिन का जो शेड्यूल था हमारा प्रमोशंस Mhm. का, वाज वेरी हेक्टिक, वेरी डिमांडिंग, काफी टाइम कंज्यूमिंग, एंड थक वक जाते थे और बैक टू बैक चलता था. एंड आई थिंक इन लड़कियों की वजह से कमराडरी इतनी अच्छी थी कि कभी ऐसा लगा ही नहीं कि थकान हो रही है. और शहनाज बहुत ही ऑथेंटिक है. उनके साथ दोस्ती करके आप कभी भी बोर नहीं हो सकते. वो आपको हमेशा सच्चाई का मिरर दिखाती हैं. वो कभी भी अम, आपसे झूठ नहीं बोलती. वो जो मुंह पे हैं वो ही अंदर से हैं. उनकी ट्रांसपेरेंसी, अगर उनमें कुछ गलतियां भी हैं तो वो कभी एडमिट करने में या फिर ओन अप करने में हारती नहीं है. उनका अगर मूड नहीं है तो वो नहीं हंसेंगी. मतलब उनके उनके उनसे मैंने एक चीज सीखी है कि इट रियली हेल्प्स टू बी ऑनेस्ट टू व्हाट यू आर एंड व्हाट यू आर फीलिंग विदाउट एनी अपॉलॉजीज. एंड रही बात कमराडरी की, आई थिंक शहनाज की पर्सनैलिटी ऐसी है कि अगर उनको आपसे ऑथेंटिसिटी दिखती है सामने से, तो फिर उनके लिए मुझे लगा खुलना फिर आसान हो जाता है. और एकदम से अगर शहनाज ओपन्स अप, देन इट्स इजी टू देन ओपन अप टू हर, देन इट बिकम्स अ फ्रेंडशिप. भूमि के साथ, बट आई फील लाइक डॉली, मेरा और भूमि का मैक्सिमम स्क्रीन टाइम साथ में ही था. Right. जो भी था, हमारे सारे सीन साथ में थे. तो फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर दिस रोल, आई रिमेम्बर मी, डॉली एंड भूमि वर द फर्स्ट पीपल हु गॉट डाउन टू reading the script Mhm. for our scenes. The first time we got locked as actors for this movie, and I have not met a more secure, generous, compassionate and kind person than Bhumi. और श्रेया, ये मैं इतनी कन्विक्शन से बोलती हूँ क्योंकि भूमि के साथ कम से कम मैंने और डॉली ने ना कुछ 150 दिन स्पेंड करें. सुबह 16-16 घंटे, 12-12 घंटे, ये 30 दिन भी. इतने टाइम जब आप किसी के साथ स्पेंड करते हो ना, तो अगर वो सच नहीं है आपके सामने तो वो दिख जाता है. एंड आई फील लाइक इन लड़कियों के साथ मुझे वो कभी नहीं दिखा. भूमि के साथ मुझे कभी भी कोई डुअलिटी, कोई फेकनेस कभी नहीं दिखी. वो बहुत ही खूबसूरत इंसान है. इतनी फाइन वो कलाकार है. शी कैन गेट अवे विद बीइंग अ स्टार and not interacting with people and having tantrums, but she's one of the most empathetic, kindest, generous people. And I have to also give it to all the other girls. We were all constantly helping each other with our crowns and our gowns. मतलब जब कोई गिरता था दूसरा उठा के उन्हें खड़ा कर लेता था. तो it That's was just so beautiful. lovely. Yeah. Also, social media has become this door to Bollywood, and Right. so many influences like earlier Prajakta Kohli, Bhuvan Bam, Harsh Vanimal Right. as well, have Right. appeared in Bollywood films, and people often troll also that अरे ये तो Bollywood वाले अब सारे influences को अब तो film दे रहे हैं and all that. So what is your take on that? ये देखो श्रुति, this is, see, the thing is, I will admit that sometimes, if you are popular and if you have a big public support base, Hmm. you are definitely a healthy investment for producers who are putting in their money in a film and casting people just to get footfall. Hmm. But I will still say that किसी भी influencer जिनका कितना भी बड़ा number हो, may it be a Prajakta, may it be a Bhuvan, Harsh, Kusha, whoever, Dolly, me, even in this movie, the three of us didn't get offered this role because हमारे followers ज़्यादा है और हम influencer content creators हैं. कोई भी आपको अपने प्रोजेक्ट में काम नहीं देगा अगर उनको आप में मेरिट नहीं दिखेगा. मेरे और डॉली के कुछ 8 राउंड्स ऑफ ऑडिशंस हुए थे जो कम से कम बकायदा 2 महीने के ड्यूरेशन चले बिफोर वी गॉट लॉक्ड फॉर दिस रोल.
Even Kusha, I didn't get a chance to maybe check with her how many, but she also had 2, 3 auditions that she gave before they finalized her for the character that she's playing. Um, so I admit कि हाँ, it looks like influencers को cast कर रहे हैं because ये popular हैं, but किसी को कुछ भी platter पे कोई नहीं देता है. और अगर देता भी है तो वो शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने आपको एक पर्टिकुलर टाइप का काम करते देखा है, जो खुद में भी एक बहुत बड़ी बात है. इट्स लाइक यू सेट अ बेंचमार्क बाय डूइंग अ सर्टेन काइंड ऑफ वर्क एंड नाउ दे वांट टू यूज दैट character or that persona you created for their big project. But largely, if they are casting you for roles of different people that they want you to portray, uh, the route is the same for everyone, honestly. फाइनलाइजेशन किसकी होती है कभी कभी, हाँ मे बी, पर ये तो गिवन ही है ना. अगर आप ज्यादा क्रेडिबल हो, अब अगर आप कोई न्यू कमर और शाहरुख खान का ऑडिशन करके शाहरुख खान को लॉक करो, तो इट्स अ गिवन दैट शाहरुख खान गॉट लॉक बिकॉज ही शाहरुख खान, वो इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, उनको इतनी जनता जानती है, इतना प्यार है उनके सपोर्ट में, उनकी पिक्चर लोग देखने आएंगे. वो चांस शायद किसी न्यू कमर पे आप हमेशा नहीं ले सकते अगर आपको शॉर्ट रिटर्न्स चाहिए. So logistically, somewhere your popularity helps you, but nobody trusts you with responsibility to portray characters or give you roles because you are popular on social media. उसके लिए बकायदा that route is the same for everyone. You work your way up. So yeah. So India has taken a big step forward by passing the women reservation bill recently. Right. So do you still feel women can talk about sex and orgasm so openly in our country? I feel like it's see, I think the kind of conditioning and the way the world works, especially in countries like ours, where women are not always prioritized. कभी कभी ना, for women to talk about their desires and pleasure and what they need and want मुश्किल है, because हम idolize उन औरतों को या वैसे narratives को करते हैं जहाँ पे औरतें हमेशा self sacrificing रहें, पीछे रहें. तो उस sense में maybe to have women speak their mind and demand what they want could take time. But just because it may take time does not mean that we shouldn't start these conversations. अगर आपके पास एक मीडियम है जहाँ पे आप उन चीजों के बारे में बात कर सकते हैं जो बहुत सारी औरतें खुल के नहीं कर सकती, तो आप उसे इस्तेमाल करके उस मीडियम का फायदा उठाइए कि बाकियों को लगे कि हाँ, ये भी एक चीज है जिसके बारे में हम खुल के मांग सकते हैं. I feel like sometimes a lot of conversations can be started if you normalize those conversations. Right. So I feel that is maybe what this movie also is trying to do. And the sex and the orgasm aspect of the film, Shruti, is just a metaphor. Right. The movie is about women being unapologetic and occupying space and demanding what they want without second guessing themselves. Okay, so last but not the least, do you have any message for your fans? Yeah, I feel like I don't know. But in Buaji style. Oh my God, very big responsibility. मैं अपने फैंस को कहना चाहूंगी कि गाइज, आप लोग जाके बुआ जी का जो सोशल मीडिया का जो ये जो वो हो रहा है, क्या कहते हैं, सुपर सेलिब्रिटी हुड जो आगे बढ़ रहा है, तो उसकी मैं बुआ जी की हेल्प करो. बुआ जी की फिल्म आई है और उसमें बहुत सारा मतलब लेडीज हैं जो अपने लेडीज वाली प्रॉब्लम्स की बात कर रही हैं, पर मजा आएगा आपको देख के, बहुत हाके मार के हंसोगे आप. तो आप अनअपोलोजाइज करके जाओ, मम्मी पापा सबको लेके जाओ. अगर वो अनकंफर्ट हो जाए तो उनको पॉपकॉर्न खिला दो, पर मेरी पिक्चर देख कर आओ, बहुत मजा आएगा, मैं गारंटी देती हूँ. मैं शोबिज. Thank you so much, Shibani, for joining us today. It was lovely speaking. Thank you.